Hey guys, welcome you on my YouTube channel Himtech. Today we will start this video onward where we have left this in the previous video. So here is first question, that in which of the following proposition both can be true but both can't be true, false. Option A is contrary, option B contradiction, option C subcontrary, or option D subaltern. So right answer is subcontrary. Subcontrary is the relationship between two proposition which cannot be false, which cannot both false but both can be true. It means that such kinds of proposition where both kinds of proposition given be false but both can also be true, right? For this the example is that consider two statements that there exists some mango that is delicious. कुछ एक ऐसे मैंगो जो बहुत ही टेस्टी है, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट सम मैंगोज दैट इज़ नॉट डिलीशियस, और वहीं पे कुछ ऐसे आम भी है, मैंगो है जो कि डिलीशियस नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये सिंपल सा आपको फंडा समझ आ रहा है कि यदि एक प्रपोजिशन सही बता रही है किसी को, दोनों ट्रू तो है क्योंकि इसमें कुछ मैंगो डिलीशियस है और कुछ डिलीशियस नहीं है, लेकिन दोनों फॉल्स भी नहीं है, कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सी प्रपोजिशन कहलाती है? सब कॉन्ट्रेरी। उसके बाद आती है हमारे पास कॉन्ट्रेरी। इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन व्हेन दे कांट बोथ ट्रू। जब ऐसी प्रपोजिशन जिसमें दोनों सही नहीं हो सकती बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट क्या है, दोनों गलत हो सकती है, दोनों सही तो नहीं हो सकती, ठीक है, दो में से एक प्रपोजिशन सही हो सकती है बट दोनों गलत हो सकती है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी। कंट्राडिक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन विच कांट बी बोथ ट्रू बट कांट बी बोथ फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सबअल्टर्न, रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन which cannot be pair, can both the be true और can both be false, ठीक है, जहाँ पर दोनों सही भी हो सकती है और दोनों गलत भी हो सकती है, तो वो सब अल्टर्न प्रपोजिशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, अर्थापत्ति मीन्स। अर्थापत्ति का क्या मतलब है? इन्फ्रेंस या परसेप्शन, कंपैरिजन या पोस्टुलेशन। सो अर्थापत्ति मीन्स पोस्टुलेशन। It means that when we give some supportive factor or some supportive argument to established factors, it is called arthapati, and that is pratyaksha means perception, right? अर्थापति सेकंड इज प्रत्यक्षा। ये मैं इसमें बता रहा हूँ कि अगर अर्थ, यहाँ तो अर्थापत्ति पूछा, अर्थापत्ति का जो मीनिंग है वो पोस्टुलेशन होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, पोस्टुलेशन। और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अर्थापत्ति के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसी टर्म्स है जो पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षा भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्यक्षा का मतलब क्या होगा? मीन्स परसेप्शन, दैट इज एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस से नॉलेज लेते हैं तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। सो अनुमान, अनुमान लगाना, यानी कि मीन्स इन्फ्रेंसेस लेना, कि कहीं से इन्फ्रेंट करना किसी चीज़ को। गेनिंग राइट नॉलेज फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन। उपमाना, उपमान करना, ठीक है, मीन्स कंपैरिजन। लर्निंग बाय एनालॉजी एंड ऑब्जर्विंग सिमिलरिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 33. Life is like a box of chocolate. You never know what you are going to get. Which type of argument is it? So answer is analogical. This argument is analogical. This statement is analogical because comparison is done between box of chocolates and one's life. The statement cited the occurrence of uncertainty in life, right? Next question. No one actually proved that
God exists, therefore God does not exist. This inference commit which kinds of fallacy? So there are four kind of fallacy, that is ad vacuum, ad populum, equivocation, and ad ignoration. So above statement is ad ignoration. Option D is correct of this 34 question. Above statement is ad ignoration, which is used in an agreement as a fallacious appeal to ignorance and refuting the existence of God just because there is no scientific proof of futile and show the ignorance. Science is evolving subject, so just because no proof is established presently doesn't mean existence can't be proven in coming year. So this is related to the science. But ad populum, what is ad populum meaning? When something is accepted, because all other people agree on it, that is called ad populum. Next is equivocation, used when a word, phrase or sentence is used deliberately to confuse, deceive or mislead. It's saying one thing but actually saying something else. This is called equivocation. Advaricodium, insisting that a claim is true simply because a valid authority or expert on the issue said it was true without any other supporting evidence offered. Next is statement. All fruits are vegetable and all vegetable are plants. So no plants is a root. Conclusion of this is no fruit is a root, at least some fruits are vegetable. So right answer of this question is only conclusion one follow, यानी कि conclusion one जो है no fruits is a root is being followed by these statement. So इसमें अगर देखें तो आपको ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, इसका मतलब है कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ये मैंने फ्रूट ले लिया, ये मैंने वेजिटेबल ले ली. अब जो दूसरा बोलता है कि ऑल वेजिटेबल आर प्लांट्स, सो ऑल जो वेजिटेबल है वो क्या है हमारे पास, प्लांट है, इस तरह से ये हमारे पास प्लांट है. नो प्लांट इज अ रूट, यानी कि जो रूट है वो प्लांट का पार्ट नहीं है. ठीक है, ये क्या हमारे पास रूट दिए. ठीक है, तो अब इसमें सिंपली आपको नो फ्रूट इज अ रूट, नो फ्रूट इज अ रूट, but at least some fruits are vegetable, some fruits are vegetable is true, not following, because all fruits are vegetable but some vegetable are not fruit. ठीक है, तो इसलिए ये एक्सक्लूड हो जाती है, ओनली वन बचती है, तो इसलिए वन फॉलोइंग कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. Aerosols have potential for modifying climate. Reason: aerosols do not interact with both the short waves and radiation. So its answer is that A is true but R is false. ठीक है, रीजन इसका जो रीजन दिया है दैट इज फॉल्स बट असर्शन इज गिवन ट्रू. Aerosols have potential for modifying climate as they interact with short waves and radiation and influence the climate. Aerosols can influence the climate by scattering lights and changing Earth's reflectivity. They can also alter the climate too. Next is question number 37.
the sound of which intensity is regarded as the safe noise level for a city. So answer is 45 dB decibel. 45 decibel is right answer. But maximum can be heard by a person at least 120 decibel. That is DJ sound etc. high level party sound etc. Next is question act and year. There are some act given and next is establishment of that act's year. First is water प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था 1974 यानी कि 1974 में. एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इट कम्स इन एग्जिस्टेंस 1981. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये इसको आपने याद रखना. पेपर में कई बार रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट पूछने का तरीका बदल सकता है. नेक्स्ट इज द रामसर कन्वेंशन डील्स विद. सो रामसर जो कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है या डील करती है, किस में डील करती है. इट इज़ अ ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एंड conserve the wetland ecosystem existing across the world. The Ramsar Convention is an international convention among the countries that come into force in 1975. The UNESCO serves as its official depository for the convention. The headquarters of Ramsar is at Glen, Switzerland, and it was meant to conserve the wetland ecosystem. I think you got this question. Next is which institute deals with coordination, development and proper planning of technical education system in the country. So right answer is AICTE, deals with coordination, development and proper planning of technical education. Council of Technical Education is a national level apex advisory body which was set up in November 1945. कब सेटअप की गई है 1945 में. and it deals with coordinated development and proper planning of technical education system in the country. Next is the correct statement about the UGC. Given are some statement was there given, but I have write only the correct statement. That is, the UGC was modeled after the University Grant Commission of the UK. It was inaugurated by then Education Minister Maulana Abdul Kalam Azad on 28 December 1953 at its headquarters in New Delhi, and it became a statutory body under the University Grant Commission Act 1956 passed by the Indian Parliament. Right? अगर आपको UGC के बारे में पूछा जाए तो आप ये स्टेटमेंट याद रखें. नेक्स्ट है हाउ मैनी मेगाबाइट्स मेक्स अ टेराबाइट. सो इसमें दिया है आपके पास 124 स्क्वायर और 124 क्यूब, 124 और 124 माइनस 1. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 124 स्क्वायर. बिकॉज अगर आप देखें तो 1024 इंटू 1024 जब हम करेंगे तो वो हमारे पास 1 TB बनता है, टेराबाइट बनता है. जब हम 1024 इंटू 1024 MB करेंगे तो वो GB बनेगा हमारे पास 1 GB. यहाँ दिया मैंने पूरा 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 124 बाइट इक्वल टू 1 KB और 124 KB इक्वल टू 1 MB and 124 MB equal to 1 GB and 124 GB equal to 1 TB. Right? Next is what is the type of an application program that
gathers user information and sends it to someone through the internet. That is spyware. स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि किसी की भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है. सो स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ malware that aims to gather information about a person's or organization without their knowledge and send such information to hack another entity without the consumer's consent. So, spyware is unwanted software that infiltrate your computing device, stealing your internet uses, checks and sensitive information. Next question is, what is the name of the program launched in India which provides access to plagiarism detection software for institutions across India? Which is the name of the program? That is शोध गंगा, शोध विरिधि या शोध सृष्टि या शोध शुद्धि. तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज शोध शुद्धि. Based on the recommendation of Subcommittee National Steering Committee NSC of eShodh Sindhu, the MHRD Government of India has initiated a program Shodh Shuddhi which provide access to plagiarism detection software to all university institutions in India since September 1st of 2019. Under this initiative, URKUND, a web-based plagiarism detection software system is being provided to all users of university institution in the country. This initiative has been formally launched by Honorable Minister of MHRD on September 21, 2019. सो दोस्तों ये था हमारा जो पेपर था, 3 सेक्शन में हमने इसको कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पेपर कवर करेंगे, उसमें और भी बेहतर चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. और अगर आपको लगता है कि कुछ नया हम कर सकते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें. आपके कमेंट्स एक्सेप्टेबल है. थैंक्स टू वॉच.